के जो लोग बैकग्राउंड हैं उनको शायद किस हद तक समझ आ गया होगा। किस किस को समझ आया? नहीं देखिए इसमें से कोई वो नहीं है, आपको समझ आया? ठीक है, और किसको समझ आया? ठीक है, आपको सर मेरे लिए न्यू ये चीज़ है लेकिन आ रही है सर। अच्छा ठीक है, आपने कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं की? नहीं सर नहीं खास नहीं तो ठीक है अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली ये इवोल्यूशन में नहीं होगा। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, इट्स जस्ट लाइक टू मोटिवेट यू कि अगर कोई लोग रिसर्च करना चाहते हैं इस फील्ड में तो कैसे रिसर्च होती है। मतलब आप पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि हाँ मेमोरी कैसे काम करती है, हाउ मेमोरी वर्क्स, हाउ यू कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम मेमोरी, सारी चीज़ें मैंने को बताई है। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को रियली सिमुलेट करना है, आपने परफॉर्मेंस पावर और जो फैक्टर्स है उनको अपने ट्रेड ऑफ्स करने हैं, तो आपने कैसे करने हैं, ठीक है, आपने नए आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अच्छा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक दफ़ा आप यानी सिमुलेटर्स पे आ जाए तो इसमें से आपके इसको दो फायदे हैं। एक आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इम्प्रूव होंगे, दूसरा आपके एम्बेडेड सिस्टम के भी कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, इट्स अ प्लस ऑन बोथ साइड्स, अ प्लस। और ये जो अप्रोच है इट इज एक्चुअली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंबाइंड अप्रोच, इसमें यू आर लर्निंग हार्डवेयर थ्रू सॉफ्टवेयर, थ्रू सिमुलेशन। जब सिमुलेशन कर रहे थे आप जानते थे बुक करते, ठीक है। अच्छा सिमुलेटर सारे C++ बेस्ड हैं। मोस्टली C++ और इन पाइथन। ठीक है, तो लेकिन पाइथन देखिए अगर आप परफॉर्मेंस में बात करें ज़्यादा जो मल्टी कोर सिमुलेटर है एक्चुअली इट इज़ अ मिक्स ऑफ पाइथन एंड C++। उसमें काफी कमांड है मेरी इसकी। नहीं अगर आप पाइथन में हैं तो मतलब है कि और काम आपसे करवा लेंगे, कोई इशू नहीं। और ये तो एक सिमुलेटर की बात की, और सिमुलेटर है जो पाइथन पे हैं, इवन C++ से कोई इशू नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन से पैरामीटर्स है, क्योंकि मैंने खुद सिमुलेटर्स पे काम किया है। मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ चेंजेस करनी, कोई इशू नहीं। हाँ दूसरी बात ये है कि जिस तरह से ये लड़ता नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, ठीक है। ये कहानी मैं जर्मनी में था ना उस वक्त जब, तो आपसे वो थोड़ा सा रिलेवेंट है। तो एक मुझे एक फ़ोन आया दोस्त का कि यार मेरा एक दोस्त है, इसका भाई है, जॉब नहीं मिल रही है, क्या कह रहे FPG में काम करते हैं। मैंने कहा ठीक है इस तरह से कर लेते हैं कि उसके 3 साल से वो आया हुआ है और वो बेसिकली फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए हुआ था। वो ये चाह रहा था कि उसको सिटीजनशिप मिल जाए। उसकी बेगम जो है ना वो यूरोपियन नेशनल थी। तो मैंने कहा मैं इसका इंटरव्यू कर लेता, एक मॉक इंटरव्यू कि उसको चाहता भी है नहीं आता। मैंने इस तरह से एक मॉक इंटरव्यू किया कि बस मैंने कहा कि मैं इंटरव्यूअर मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ। एक आधे घंटे तक मैंने उसका इंटरव्यू किया, उसको आता कुछ नहीं था ना। तो मैंने उससे कहा था क्या करते हैं, कहते मैं MTC में था। मैंने कितने साल काम किया? 9 साल। मैंने कहा ठीक है समझ आ गई बात, समझ आई बात, ठीक है। तो आप जब इस तरह के सेटअप में होते हैं, सरकारी सेटअप में जो इस तरह से, कुछ लोग कहते हैं अपने आप को अपडेट रखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन जब सरकारी सेक्टर में होते हैं तो फिर वैसे भी ये होता है कि आपने कहा था कि हमारे साथ चाय पीनी है, नौकरी करनी है, जाना है, अखबार पढ़ना है, नमाज भी पढ़नी है क्योंकि मुसलमान हैं हम। सर उसके अलावा भी और भी बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है ना, स्पेशली इस तरह के लेवल तो। हाँ वो तो वो और राज्य है। सबसे बड़ी बात है सर हमारे पास इंटरनेट नहीं होता, वी डू रिसर्च विदाउट इंटरनेट। वो आपको मैं तरीके बता दूँ, कोई टेंशन ना ले। लैपटॉप तो है ना? लैपटॉप है, ऑफिस में नहीं होता, मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ सर। ऑफिस में इंटरनेट नहीं है हमारे पास। इंटरनेट नहीं तो लिनक्स तो है ना सर? कुछ भी नहीं है। नहीं तो लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं ना? हाँ तो कर सकते हैं। तो आप सिमुलेटर आपकी कोडिंग करनी हो, क्या करना है, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। आप फाइल को लगाएं, उसको गूगल ड्राइव पे लगाएं, करें, हम कोड्स को चेक करते रहेंगे, गिट की रिपोजिटरी बनाएं, कोई भी काम कर सकते हैं। वो यार काम करना चाहिए, इफ देयर इज अ वे, तरीके निकल आते हैं। अच्छा नाउ आई विल बी अ लिटिल बिट मोर बुकिश नाउ, ओके, थोड़ा सा बुकिश। few so these are the notes, undergraduate notes. I already shared the link of these notes. अच्छा एक दफ़ा अगले क्लास में कोई ला सकते हैं सर कोई लैपटॉप? एक लैपटॉप कर लें आप, जो सारी मैंने गूगल ड्राइव की है वो आप अपने उस पर हार्ड डिस्क पे कर दें, और यहाँ पे हो सकता है मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ आप उसको एक्चुअली हार्ड डिस्क पे कर लें, डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि जो गूगल ड्राइव के लिंक्स हैं या जो यूट्यूब के जो चैनल्स हैं। अच्छा कुछ लेक्चर ऐसे हैं जो मैंने अंडरग्रेड को भी दिए हुए हैं,
ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है मैं यहाँ पे तेज पढ़ाऊँ, लेकिन इसके जो लेक्चर्स हैं ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं आपको उनका लिंक, मेरा चैनल है, ठीक है, चैनल का लिंक मैंने भेज दिया है। उसमें एम्बेडेड सिस्टम के फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर 34, उसमें ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा लेक्चर है। मैं आपको बता दूंगा कि हाँ मैंने कहाँ किस लेक्चर से लिया, तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो कुछ लेक्चर ऐसे होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं कि ये चीज़ें मैं अंडरग्रेड की रिवाइज करूँगा, ठीक है। जब मैं अंडरग्रेड की कुछ चीज़ें को रिवाइज करूँगा डेफिनेटली विल बी वेरी फास्ट, क्योंकि आपका कोर्स ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। हमने कुछ एडवांस चीज़ें करनी। अगर आपने डिटेल्स में देखने और आराम से देखने तो आप यूट्यूब के जो लेक्चर वीडियोज हैं, और बहुत अच्छी यानी वीडियोज़ हैं, इसमें सारी चीज़ें, स्क्रीन भी मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, स्क्रीन शॉट और सारी चीज़ें बहुत ही, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी। अगर हम छोटी सी एक प्रॉब्लम कर ले, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। हम कहें कि मेमोरीज अवेलेबल, मेमोरीज ऑलरेडी हमने की थी। एड्रेस बस, मेमोरी अवेलेबल एड्रेस बस बिट इज 16 बिट, ठीक है। डेटा बस बिट 32 बिट। अच्छा, ये नोट्स भी हैं, मैंने ऑलरेडी इसको गूगल ड्राइव पे किया हुआ है, तो आप यहाँ पे करेंगे। अब बेशक आप ना करें, ना लिखें, ये सोल्यूशन यहाँ पे भी है, वो बेशक ना लिखिए, आप क्लास इधर फोकस करें। 32 बिट, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ मेमोरी? साइज ऑफ मेमोरी इन bytes. If you remember how we can represent memory, memory can store 2 is for a cross w. Okay, so what is a? 16. What is w? 32. So what is memory size? So memory size is actually, memory size in bits is equal to 2 to the power a cross w. What is 2 to the power a? 2 to the power 16 cross 32. Okay. Yes. 2 to the power 16 cross 4 cross 8. Can I write? Yes. 2 to the power 16, 2 to the power 18 cross 2 to the power 18 bytes. Sir. Yes, sir. Okay, this is 2 to the power 18. 8, it's bits. Now we are converted into bytes. If you convert it 2 to the power 8, 2 to the power 10 bytes, so it is 256 kilobyte. So actually, now it's a very simple formula. Memory size in bits. So if A is given, W is given, we can get memory size. If the memory size is given and A is given, so actually it's simple. ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप ऑलरेडी कर लीजिएगा, ठीक है। वो बहुत सिंपल है, ये तो इतना से वो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने बात की थी, ओके। Then now we have a transfer rate, okay, transfer rate. अच्छा, so again simple सी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो चीज़ है ऑलरेडी अपलोडेड है YouTube लेक्चर्स, ठीक है। जो अंडरग्रेड की है वो थोड़ा सा मैं बहुत स्लो में कराता हूँ, तो आप उधर से भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम, memory size is 16 MB, okay. Then data bus is bit is 16 bits. So what is address bus? Size of the address bus, we need to find it. And what is the transfer rate? Okay, what is the transfer rate? Okay, what is transfer rate? So the transfer rate is equal to 1 divided by Tm. Okay, Tm is equal to memory cycle time. What is Tm? Memory cycle time. And if you look at Tm is equal to Ta plus T overhead time. What is Ta? Excess time. And what is overhead? Overhead time. What is excess time? Sir, the time at which access the request is made and when the response is until the data become available. So I told you that let's assume this is T0. Let's assume these are different time instants. T0. Now we have T1, and now we have T2. There are now two times. At T0,
Now, actually, if we are accessing memory, so some intelligent device is reading data from memory. Who is that intelligent device? It can be a microprocessor. It can be a direct memory access. It can be an accelerator. It can be a video code, any kind of intelligent device. Okay. So it means at T0, requester make a request to memory. What type of request? Read request or write request. So we need read or write request. To make a request, we need some information. कौन सी information है? Address lines. And also address stop, if you remember. Address stop is a signal generated by microprocessor. So microprocessor makes a request and intelligent device. T1, the data becomes available. So it's the time between the microprocessor makes a request and the data becomes available. What is this time? T1 minus T1. What is this time? The difference between these times? T1 minus T1. T access. T1 minus T0. Now this time is overhead time. Overhead time is the time between the requester make one request and till it makes a second request. So at this point, microprocessor makes a second, and this is the overhead time. And this overhead time varies from architecture to architecture, memory architecture to architecture. Okay. And this is actually given in the data sheet. Now I'll explain this with an example. What's your name? Hussain. What's your name? Farhan. I make a request at time T0. You give me an answer at time T1. The interval between T0 and T1 is now the access time. Then I make a second request to you. After he responded, and then I made a second request. So this time is called as समझ आएगा? Okay, so अब इसको से. So this is the time a requester makes a request to memory till the time a second request is again made. अब देखिए अगर request कर रहा है तो सब तो अपना डिले है ना. अगर मेमोरी का डिले है तो माइक्रोप्रोसेसर की तरफ से भी डिले है ना. Yes sir. ठीक है, या कोई बस का डिले हो सकता है, क्या कौन सा डिले हो सकती है, it depends from architecture to architecture. So actually if you see the memory cycle time, so this is memory cycle. So now we have to this. So we have now so we have access time of 10 nanoseconds. Let's assume TA is 10 nanoseconds. And overhead time is 4 nanoseconds. Okay, so how we can do this now? First we need to find A. Okay, so memory size 16 MB is equal to 2 to the power A cross W. Am I right? 2 to the power 4, 2 to the power 20, 2 to the power 3 by 2 to the power A. We need to find A. What is W? 16 bits. It is in bits. If it is given in bytes, we need to convert it into bits. Okay? So 2 to the power 24, 27, 2 to the power A cross 2 to the power 4. So what is A? 23. 23. Simple mathematics. Okay? Now we need transfer rate. So transfer rate is equal to 1 divided by, can we see? TM? 10 plus 4 nanosecond. Okay? Nanosecond. Okay, so can we write like this? 1 divided by 14 multiplied by 1 divided by nanosecond? 1 divided by 14 multiplied by 10 is for 9. Okay, so if you look, convert this 1 divided by 14, so 1 divided by 14 is actually 0.0714, 0.0714 multiplied by 10 is for 9. So if you shift this 1, 2, 3, 71.4 multiplied by 10 is for 6. So it means if you look at this, it is making a transaction of 71.4 multiplied by 6 transactions per second. What is the size of each transaction? 16 bits. So it means
16 bits. So can we do it like this? 71.4 multiplied by 10 to the power 6. Let's assume this transaction size is 1 word. And word size is 16 bits. This is our assumption. So it means it is 71.4 multiplied by 10 to the power. Okay. Can we write this? 71.4 mega words per second. Can we write it like this? 71.4 multiplied by 2 mega bytes per second. Can we write it like this? 71.4 multiplied by 2 multiplied by 8 mega bits per second. So these are different units. So actually if I ask any question regarding this, so you have to convert it into units. ये जो formula है, first you need to convert it into bits. और ये जो होगा, ये W भी क्या होगा? Bits में होगा. ठीक है? तो आपने कैसे convert करना होगा उसको इस तरह से देखें. Okay. So now these are like just simple. Okay, you can also take a screenshot of this. Screenshot and just you can upload it. So इसमें जो TM था ये हमारे पास initially given था. TM transfer rate is equal to 1 by TM and TM है ना? So what is TM? TA plus TO. TA is 10. अच्छा ठीक है. Okay, and then I also define this TA and TO. We have defined it. What is access time? What is overhead time? Okay, agreed? आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अच्छा, simple अलग जो simple question है. अच्छा इसको एक और simple सा question है. Basically ये तो already notes में भी है. So for any memory, let's assume we have a memory of access time of TA is 7 nanosecond. Okay, TO is 3 nanosecond. And transfer rate. What is transfer rate? Okay, and then we have data bus with W is equal to 32 bits. Okay, 32 bits. Okay. So, what is transfer rate? 7 plus 3 nanoseconds. 1 divided by 10 multiplied by 10 to the power minus 9. 1 divided by 10 to the power minus 8. Is equal to 10 to the power 8. Transactions for what? Per second? 10 to the power 8 transaction per second. When it's 10 to the power 8 long word per second. Let's assume this is long word. Long word is 4 bytes. Word is 2 bytes. Byte is 1 byte. Okay, and then bits. So 10 is for 8 multiplied by 2 words per second. 10 is for 8 multiplied by 2 multiplied by 2 bytes per second. So 10 is for 8 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 8 bits per second. Okay. So अब उसको different तरीके से देखते हैं. उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि we are transferring 32 bits. We are transferring 32 bits or 4 bytes in 10 nanosecond. 1 byte in 2.25 minutes because the size of one transaction is 32 bits. Okay. अच्छा यहाँ भी याद रखिए it is the maximum transfer rate. It is the maximum transfer rate. Actually because when microprocessor makes a request and then microprocessor makes a request, and it's not always possible that you always need the data from memory. Sometimes you need the data from memory, sometimes you don't need the memory. If you remember in the previous class, we did some signal address stop. When address stop is one, whenever microprocessor needs the data, when microprocessor does not want to read the data, so should it generate an address stop signal? No, it does not need the data. So it is the maximum transfer rate. If you remember, if you want to buy some memory or hard disk, so they will report the number of the maximum transfer, not the minimum transfer. That is the maximum transfer. And when the transfer will be made, when you are copying and pasting to the hard disk, you are copying and pasting, actually then it will be doing the transaction. Especially in hard disk. Okay, so this is all the parameters you need to know.
ओके ओके नाउ अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी अंडरग्रेड से रेलेवेंट है, ठीक है, अंडरग्रेड से रेलेवेंट है, तो मैं आई विल मूव इट वेरी फास्ट, ठीक है। ये जो सारे लेक्चर्स हैं ऑलरेडी अंडरग्रेड के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उस पर अवेलेबल है, आई विल आल्सो शेयर द लिंक, ओके। सो and I will be a little bit fast here. So now let's assume we have some, because this is a topic that from our undergrad course. So C is equal to A plus B. This is a statement. This is an operation. To remember, okay. So C is equal to A plus B. So this, what is C? Is the result. Operand. C is equal to A plus B is an expression where C is result operand, A is source operand 1, B is source operand 2, and plus is operator. So operator can be add, subtract, or multiply. So we are now studying addressing modes. Addressing mode. So an addressing mode tells you where the operand lies. If you remember, I told you that microprocessor can perform 3 operations. What are these 3 operations? Data transfer, Data transfer, data processing, data transformation, and control. If you remember, okay. So in any type of operation, if say we need to perform the operation on the data, so actually plus is in our data transfer instruction, data transformation instruction. Transformation. Data transformation. Move. Transfer. Data transfer instruction. So actually, whenever we will be interested in any type of operation, we will be interested in the location of the operand. So if you remember, if you say that the state of the microprocessor is actually defined by the state of the register files and the contents of the memory, if you remember. Okay, so let's assume we are studying a very simple architecture of microprocessor. So let's assume we have a microprocessor, and this microprocessor we have some register R0, R1, R2 up to R31. How many registers are there? 32. So let's assume we are assuming a very simple architecture. Maybe in complex architecture there are more registers. In some architecture there may be 64 registers, in some architecture there may be 128 registers. But we are assuming a very simple architecture in which there are 32 registers. Okay, now we also have some memory. So when we have some memory, so now this is your memory, and actually if you look at memory, how it would look like, it would be look like 2A cross W is the bit of the address line, the data line. If you have an address, so actually we need some address 0x000000, 0x000004, 0x00008, and so forth. 0x529324, 0x529328. 0x532932C, and so forth, so on, and next is 0xFFFFFC. These are the addresses. Okay, now these are the addresses and these are the memory contents. These are the memory contents, and let's assume that the contents of the memory is, let's assume 0. I'm writing everything in hexadecimal, so let's assume this is 2, 3, A, B, C, 2, 0x000012, 0x539234, 0x something. We also have some registers. Let's assume this register 0x5392, 0x1124, 0x0000. These are the contents of the register file. So whenever we want to do any kind of operation, so we will be interested in, okay, let's say if you want to perform these operations, C is equal to A plus B, so this addressing mode will tell whether the operand will lie within the register, operand may lie within memory, or operand can be a part of instruction. There are 3 possibilities. Operand can lie within the register, operand can lie memory, operand can be a part of instruction. Okay, now first possibility. So there are 3 possibilities. So it is addressing mode. So there are 3 possibilities. Operand lie in register, operand lie in memory, and operand lie in can be a part of instruction. Now, if you look at the microprocessor, so microprocessor perform 3 type of instructions. कौन-कौन सी instructions हैं? Major categories. Data transfer, data
Transfer, data Transformation. transformation and control instruction. Okay, now you link all these things here. So the addressing mode will tell where the operand will lie. Where the operand will lie. Okay. Now the first type of addressing mode is register addressing mode. Register addressing mode. In register addressing mode, the operand lies within register, and in assembly it can be denoted by any register Rn. And what is n in this particular example? What is n? 32. No. 31. No. 0 is smaller or equal to I. It can be any register I. 0 is smaller or equal to I, or smaller or equal to 32 is total number of registers. So Ri, it can be R0, it can be R1, it can be R2. It can be determined by any register Ri. I is a particular register. Okay, so I will give you an example. So if you say add R3, R2, R1. So this addressing mode. Okay, now if you look at this R3, so actually now if we say this C is stored in register, A is stored in register, and B is also stored in register. And what is the operator now? Add. Okay? So this addressing mode is called as register. And in register addressing mode, the operand lies within the register. Operand lies, and there are limited registers. When we have limited registers are faster compared to memory. So actually it is used for faster computation. जी सवाल. अगर एक सर एक किसी मेमोरी लोकेशन में और एक रजिस्टर में हो, क्या करें? अगर एक अपरेंट जो है तो वो तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड नहीं रहेगा ना. अगर मेमोरी एड्रेसिंग मोड है तो वी नीड अनदर एड्रेसिंग मोड. I have not told you about another addressing mode in which the operand lies in memory. सर हम कौन से अपरेंट को देखेंगे कि उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे. हम ये बात कर रहे हैं कि अब ये जो Ri के अगर if you have specified register with Ri, it is register addressing. It is register. I will explain this with another example and later on maybe it will be more clear to you. Okay, so now if we say, and let's say this is R3, R1, R2, R3. Let's assume the contents of R3 is 0x93245 6. So okay, what will it do? It will add the contents of R2 and R1. What is the contents of R2? 0x 0000. Let's assume make it 2. 0002. And what is the contents of R1? 0x 1124. What's the final result? 0x 1126. What will be the new contents? 0x 1126. So this was the state of the microprocessor before the execution of this instruction. And after the execution of this instruction, the state of the microprocessor is changed and the register content should be changed. So this is an example of which instruction? Data transfer instruction or data transformation instruction? Data transformation. Which addressing mode did we use? Register. In which the destination register also lies within the register. Source also lies within the register. Source 2 also lies within the register. Okay? Now, another type of addressing mode. Absolute addressing mode. Absolute addressing mode. So in absolute addressing mode, operand lies in memory. Now I will refer back to your question. Operand lies in memory. Whenever you want to access the data from memory, in which thing you will be interested? Not only about the operand, address, but also the address. So what is address? Address of the operand is part of instruction. Address of the operand is a part of it. I will explain this with an example. Now if we say move R3 and dollar sign means hexadecimal. Okay,
$0x0008. What we are doing? Which addressing mode is this? Let's say सर ये तो ऑपरेंड तो रजिस्टर में है. which addressing mode is this? ऑपरेंड की बात ना करें. Which addressing mode is this? रजिस्टर. Register addressing mode. Which addressing mode is this? ये एब्सोल्यूट इमीडिएट. Now, in this instruction, what is this instruction? Data transfer or data transformation? डेटा Data ट्रांसफर. transfer. So this is a data transfer instruction. What we are doing? What is destination? R3. R3. Destination is register. What we are doing? We are moving the contents of this memory location. The contents of this memory location to which register? R3. R3. Make it okay. R0. ठीक Make है. it R0. R0. Okay. So destination is now R0. We are moving the contents of this address. What are the contents of this address? To which location? This location. What are the new contents? 0x539234. The old contents will be overwritten जी सर. with the new contents. So now in this case, we are moving the contents of the memory to a register. Okay, now from the perspective of microprocessor, is it a read operation or a write operation? It's a read operation. It's a read operation. From the perspective of microprocessor, you are reading from memory or you are writing to memory? Reading from. You are reading from memory. So it's a read operation. You are writing to microprocessor, but you are reading from memory. So it's a memory read operation. If you remember in